Students, in last lecture of forms of business organization, that is FBO, we had started the chapter that is of various forms of business organization, right? हमने पूरा चार्ट देखा था, तो सारे टाइप्स देखे थे, राइट? उसमें सबसे पहले तो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, that is of private sector and public sector, right? And private sector में और public sector में दोनों में दो 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 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, that is of non corporate and corporate, right? Okay, after that we had seen the first point of private sector organization under non corporate, that is of sole proprietorship, right? And we had understood the meaning of sole proprietorship, that is sole means one person, right, alone, one person, and proprietorship means proprietor, the responsible person, right? So there is the all responsibilities under the one person, right? Only one person is handling or managing one business, right? And generally this types of organization we had seen in either small units or medium scale units, right? We had seen the partnership form, right? And in that we had seen that two or more persons when getting together and make any written agreement, that is called partnership deed, right? And they when they enter into the partnership deed, the partnership form organization come into existence, right? Okay, then we had seen that there should be two or more partners, right? And it should not exceed more than 20, right? 20 से ज़्यादा पार्टनर्स होने नहीं चाहिए. In banking industry it is 10, right? So these are the norms of partnership form. So we had understood two things. First one is sole proprietorship and second one is of partnership, right? Then now we will move forward to joint Hindu family, right? It is the most common thing till today in India and in many other parts also. Still this type of organization is still going on, right? Joint Hindu family or Hindu undivided family, right? Basically majority of Hindus are associated with this kind of business, right? This is the tradition that our ancients has given, right? हमारे जो पूर्वजों ने जो मतलब जो दिया गया है, हमारे दादा परदादा जो काम करते थे वो बेसिकली यही चीज के अंदर काम करते थे, राइट? हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एज वी ऑल नो कि आज घर के सारे मेंबर्स जो कोई एक बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हैं और वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन संभालते हैं, right? This is called joint Hindu family or Hindu undivided family. Generally we are saying that HUF, right? So ये पूरी जो चीज है वो वही है, right? But इसको हमें थोड़ा मीनिंग बना के लिखना होगा एग्जाम्स में, right? So we will see once the meaning, right? That different people engage means कहीं पे engaged हैं, आपने एंगेजमेंट वर्ड तो सुना ही होगा, राइट? एंगेज कहीं ना कहीं वो एंगेज है, जुड़े हुए हैं, राइट? एंगेज इन सेम बिजनेस, एक ही बिजनेस में आर द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली, एक फैमिली के मेंबर हैं, रनिंग फैमिली बिजनेस, जो बच्चों से फैमिली बिजनेस चला आ रहा है वही चला रहे हैं, इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली or Hindu undivided family, right? It is the simplest form of organization, right? And in majority of Indian continent यही चीज देखने को मिलती है, right? तो ये सारी चीजें joint Hindu family या HUF Hindu undivided family कही जाती है, right? Okay, तो ये सब मीनिंग हमने देख लिया. अब
मतलब 3-4 भाई हैं, राइट, ब्रदर्स हैं, राइट। अब उसमें से जनरली मेजोरिटी यही देखने को मिलता है कि जो बड़े भैया है वो डिसीजन मेकर होते हैं, राइट। एज वी ऑल नो दैट कई बार कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वहीं पे अटक जाती है कि भाई नहीं, हमारे बड़े भैया जो कहेंगे वो हम करेंगे, राइट। हमारे बड़े भाई साहब सारा ये संभालते हैं, सारा डिसीजन वही लेते हैं, उसके आने के बाद हम ये डिसीजन ले सकते हैं, या वो जो कहेंगे वो फाइनल रहेगा, राइट। सो दिस काइंड ऑफ फैमिली बिजनेसेस आर स्टिल रनिंग इन इंडिया, राइट। और जो जो बड़े भैया है, जो डिसीजन मेकर है, राइट, जो मेजॉरिटी भाई डिसीजन लेते हैं यस, अदर्स आर आल्सो देयर। जो बड़े भैया है वो सबकी राय लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। बट फाइनल डिसीजन मेजॉरिटी उसी का रहता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं बड़े भैया वाली चीजें। सो वो बड़े भैया, सच सीनियर पर्सन इज कॉल्ड कर्ता। वो क्या होता है? कर्ता होता है, उसको क्या कहा जाता है? कर्ता, राइट। कर्ता धर्ता हम जिसको बोलते हैं कि ये बिजनेस के कर्ता धर्ता वही है, क्योंकि जनरली मेजॉरिटी फैमिलीज में यही स्टोरी होती है कि किसी सीनियर पर्सन के डेथ के बाद, साये के चला जाने के बाद हमारे बड़े भैया ने ही हमको संभाला है, राइट। और मेजॉरिटी ये बिजनेस के साथ जुड़े हुए होते हैं, राइट। सो दिस काइंड ऑफ सीनियर पर्सन इज कॉल्ड कर्ता। एंड द लायबिलिटी, और उसके ऊपर जो लायबिलिटीज होती है, जो जवाबदारियां होती है, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज। Whatever the business decision or business situations, right, his liability is the first and foremost, and it is unlimited, right। उसकी जो जवाबदारियां होती है वो अनलिमिटेड होती है, right। So this kind of senior person is called कर्ता, right। So बस इतना ही है जॉइंट हिंदू फैमिली में, राइट। तो हमने 3 पॉइंट्स देखे, राइट। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहले आता है, ये हमने नॉन कॉर्पोरेट में देखा, राइट। नॉन कॉर्पोरेट में हमने 3 पॉइंट देखे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली, राइट। अब हम चलेंगे कॉर्पोरेट की ओर। नॉन कॉर्पोरेट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट के पॉइंट्स देखेंगे, राइट। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अंडर द कॉर्पोरेट स्टेटस, वी हैव सीन sole proprietorship, partnership and joint stock, Hindu undivided family, right. Sole proprietorship, partnership and Hindu undivided family, that is HUF, in under the non-corporate status, right. Now under the corporate status, the first point is joint stock company, right. Okay, as we all know about the company, right? The term, when we heard the company, we came into the mind the formal company and the shares, right? Okay, so the same thing is here, but some interesting things are also here, right? Let's understand the joint stock company. Capital of the organization is divided into small parts, that is all know, and which is known as shares. पूरी कैपिटल जो है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, राइट। दैट इज नोन एज शेयर्स, राइट। एंड सब्सक्राइब्ड बाय पीपल फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट, which is purchased by the people for investment in that particular company. शेयर्स खरीदो, राइट, पैसा दो, शेयर्स खरीदो और मालिक बन जाओ, राइट। अगर आपने गुरु पिक्चर देखी होगी तो कैसे कंपनी शुरू करते हैं, राइट, कैसे कंपनी को एस्टैब्लिश करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है, राइट। सो प्लीज मस्ट वॉच दैट मूवी, राइट। देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे विजन एक आता है, राइट, कैसे विजन डेवलप
होता है। ऐसी मूवीज स्टूडेंट्स देखनी चाहिए, राइट। मूवी है और जैसे कि मैंने 2-3 बार जिक्र भी किया था, स्कैम सीरीज है, स्कैम 1992, हर्षद मेहता का जो स्कैम है, राइट, वो एक बार देखना चाहिए। ऐसी मूवीज से क्या होता है, हमारा विजन डेवलप होता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें लाइफ में कुछ करना है, राइट। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो मैं आपको सजेस्ट करता रहूंगा। बुक्स हैं, रिच डैड पुअर डैड, एक बार आप वो पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, पर फिर भी आपको अगर जितना समझ में आए पढ़िए, आपका रीडिंग कंटिन्यूअसली चालू रखिए, राइट। और बने उतना इंग्लिश वर्जन ही यूज करें ताकि योर इंग्लिश कैन बी इम्प्रूव्ड, राइट, योर वोकैबुलरी कैन बी इम्प्रूव्ड, योर रीडिंग स्किल कैन बी इम्प्रूव्ड, राइट। तो बहुत सारी चीजें आपको जानने को भी मिलेगी और आपको बहुत सारे नए वर्ड्स भी पता चलेंगे। जैसे जैसे आप रीडिंग करते जाएंगे ना, आपको इतना मजा आने लगेगा कि नहीं और पढ़ लो थोड़ा, राइट। बहुत ही अच्छी बुक है, राइट। एक थोड़ा सा इंटरेस्ट अपने आप में डेवलप कीजिए, फिर बाकी सारी चीजें आपको मजा आने लगेगा करने में, राइट। तो एक बार जरूर से पढ़िए रिच डैड पुअर डैड, बहुत ही बढ़िया बुक है, राइट, जिसमें दर्शाया गया है कि कैसे रिच डैड कैसे रिच है और पुअर डैड क्यों पुअर है आफ्टर बीइंग सो मेनी वेल्थ, राइट, जिसमें वेल्थ का मीनिंग बताया गया है, इन्वेस्टमेंट करना, क्यों करना, कैसे करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, राइट। तो ये 2-3 चीजें जो मैं आपको जो सजेस्ट करता रहूं वो प्लीज करिए, आपके फायदे के लिए है ये, राइट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस आवर पॉइंट अबाउट द कंपनी। जैसे कि हमने देखा, द कैपिटल ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू small parts, that is called shares, and it is subscribed by or purchased by the people, right, or by for the investment, right. Okay, then in return company gives financial reward if possible in form of dividend, right। उसके बदले में कंपनी क्या देती है, डिविडेंड, अगर पॉसिबल है तो। अगर कंपनी का रिटर्न इस साल का अच्छा गया है, अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है, अच्छा कंपनी को दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की वजह से अच्छा फायदा मिला है, राइट, तो कंपनीज कई बार डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, उसके प्रोपोर्शनल में। जितने, अगर मान लीजिए मेरे पास 100 शेयर्स है, 100 नंबर्स ऑफ शेयर्स आर देयर, राइट, तो उसके प्रोपोर्शनल में मुझे डिविडेंड मिलता है, राइट। अगर पॉसिबल है तो मिलना ही और कंपनी दे ही ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। ओके, देन शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनीज आर नोन एज ओनर्स। जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ओनर जाने जाते हैं, राइट। बट लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। कितने शेयर्स उसके पास है उसमें उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसे फॉर एग्जांपल आज कंपनी के मेरे पास 100 शेयर है और मैं ओनर हूं और जाके उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में बैठ जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट। उसमें उसके नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अगर कंपनी के 30% शेयर्स अगर मेरे पास है, देन आई एम द मोस्ट वैल्यूएबल ओनर, राइट। तो ये चीज है कि नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। दूसरी बात, कंपनी के शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट दोनों अलग चीजें होती है, राइट। तो ये बात भी समझना जरूरी है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, द यूनिक फीचर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। आज मैं ओनरशिप और ऐसा ओनर सबको बोलने लगूं कंपनी में ऐसे ये करो वो करो, नहीं, ऐसे नहीं होता है, राइट। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर्स एंड मैनेजमेंट बोथ आर डिफरेंट इन कंपनी, right? If I do have 30% of shares of the company, I
I can be one of the board of director in the company, right? Because I do have 30% of shares in that company, right? Okay, so 2 points are there. Shareholders of companies are known as owners, but the liability is limited to actual number of shares held by them. कितने शेयर उसके पास है, उसके ऊपर से उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, राइट? एंड यूनिक फीचर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। देन सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनीज का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, राइट? इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल चेंज, देन आल्सो कंपनी विल कंटिन्यू, राइट? कंपनी कभी भी बंद नहीं होती है, राइट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं पर कंपनी कंटिन्यू रहती है, राइट? इन द सेम वे लास्ट वन इज कंपनीज कैन बी इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट और पब्लिक, राइट? कंपनी या तो प्राइवेट भी हो सकती है या पब्लिक भी हो सकती है, राइट? वो कैसे पता चलेगा? बाय इश्यूइंग ऑफ द शेयर्स। If company is issuing their shares to the general public, to the market, then it is a public company and it is known as limited company। जो आपको जानने को मिलता है कि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, what is the difference, right? If company is issuing their shares to the general public, to the local, to the market, then it is known as limited company, public company, right? And if the company is issuing their shares to themselves, to their family members and friends only, then it is a private company and it is known as private limited। अगर कंपनी अपने शेयर जनरल पब्लिक में, मार्केट में वो इश्यू करते हैं और अदर जनरल पब्लिक उसको परचेज करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है, राइट? देन इट इज नोन एज लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। व्हाई? बिकॉज़ इट इज देयर शेयर इज इश्यूड टू द पब्लिक, राइट? एंड अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में इश्यू करते हैं और वहीं तक सीमित है तो उसको क्या कहेंगे? प्राइवेट कंपनी। इट इज आल्सो नोन एज प्राइवेट लिमिटेड, राइट? सो दिस इज द लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक एंड प्राइवेट, राइट? सो दिस इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी, दैट इज कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? जो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है दैट इज ऑफ under the corporate status, joint stock company, right? Okay, after the point of joint stock company under corporate status, the next point is cooperative society, right? Okay, so we had seen and we had heard the term of cooperative society many times, but what actually is that we need to understand, right? Cooperative society's rules and regulations and form of cooperative society is most likely similar to the company, right? They are also issuing the shares and all these things, right? The formation is most equivalent to the company, but still there are some changes, right? There are some difference between company and cooperative society, right? The formation and the main motive of the company is profit motive, right? The main motive of company is profit motive, but here the cooperative society's main aim is to provide service, right? To provide service either as nominal profit or with equivalent cost, right? To cover the cost, both of this, right? Okay, so here the main motive of cooperative society is to provide service only, not the profit motive, right? Let's see inside this and let's understood. Company formed with profit motive, but cooperative society formed with service motive, right? The second one is voluntary association of people joining for mutual help, service and attaining
some common economic objectives, right? Some common goals are there, right? Some common goals with the point of towards health, right? Towards services, to provide the services to the nation, to the country, right? These are the some common objectives of group of people who are joining this cooperative society, right? Then price of shares are very much nominal, so that even common people can get its benefit, right? As I had said earlier, that they are also issuing share, right? They are also issuing shares, but the price of their shares are very nominal, right? That even this common person can afford it, right? Say for example, like 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees of one share, right? So even the normal person can afford that kind of price, and even they can afford to purchase the near about 10 or 20 or 50 shares, 50 number of shares, right? That 50 number of shares at rupees 50, right? So even normal person can afford this to purchase this shares, right? Then organization stresses on equality and cooperation. I will take this point simultaneously, second last and last. मैं दोनों पॉइंट साथ में आपको समझाऊंगा. Organization stresses on equality and cooperation. No discrimination among the members. Okay. First, we need to understand the meaning of discrimination. Discrimination means भेदभाव, जो हम differences कहते हैं, right? Difference on the basis of caste, on the basis of skin color, right? ये सारे differences है on the basis of nationality, on the basis of gender, स्त्री पुरुष का भेदभाव, right? caste base में भेदभाव, right? और skin color में काले गोरे का भेदभाव, right? So the main objective of cooperative society is to give service, and in these objectives there is stress on equality, that each and every person is equal in the organization, right? Whether he or she is from any of the caste or any of the country, right? तो वो क्या है, एक सब यहाँ पे एक समान है. कोई भी आज कोई भी देश में हो, या फिर कोई भी कंट्री से हो, या फिर कोई भी जात से हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, everyone is equal, right? So cooperative society's main aim is service motive, and they are given stress more on equality, and there is no any discrimination. Discrimination means differences, right? Differences on the basis of caste, right? Discrimination among the members, right? Members के बीच में कोई discrimination नहीं है. Okay, this is the cooperative society, and we had understood the joint stock company, right? So basically we had seen about the corporate status and non-corporate status, right? Due to there is some lack of efficiency, lack of financial sources, right? Lack of finance, right? There is a formation of corporate status, right? जो हमने नॉन कॉर्पोरेट स्टेटस में देखा था, देयर इज अ लैक ऑफ फाइनेंस. कि भाई आज मैंने एग्जांपल दिया था प्रोप्राइटरशिप का, राइट? आज हम ले लेते हैं कोई भी प्रोप्राइटरशिप, राइट? तो प्रोप्राइटरशिप में फाइनेंस की कमी तो है ही है, साथ में मैन पावर की भी कमी है, राइट? कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की भी कमी है. अगर आज कोई एक आदमी अपना डिसीजन लेता है, राइट, तो वो अफेक्ट कर सकता है, राइट? आप खुद भी सोच सकते हैं कि पैनल ऑफ मेंबर्स, अगर एक ग्रुप में 5 लोग हो और सबकी राय लेके जो बिजनेस किया जा सकता है, बिजनेस किया जाता है, उसमें बहुत फायदा होता है, राइट? तो वो सिर्फ एक आदमी अपना डिसीजन लेके जो अपनी सोच के प्रति सीमित है, वो अपना डिसीजन बिजनेस में डालेगा, राइट? तो वो बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है. सिमिलरली फाइनेंस में भी वो
आज एक आदमी अपना पैसा कितना डालेगा डाल के, राइट। सो देयर इज a limitation of finance as well as manpower as well as management, राइट। सेम में पार्टनरशिप में 20 लोग होते हैं, राइट, पर फिर भी फाइनेंस में तो एक प्रकार का लिमिटेशन आ ही सकता है, राइट। और पार्टनरशिप में क्या होता है दूसरा कि एक्टिंग पार्टनर, सुप्रीम पार्टनरशिप में भी फर्क पड़ता है, कोई मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अलग रहता है, राइट। तो वो भी सामने कंपनी के फॉर्मेशन में क्या है, क्लियर है कि ये चीज है जो मैनेजमेंट बॉडी है, ये चीज है वो शेयर होल्डर्स है, राइट। तो कंपनी के पास पैसा भी है, मैनेजमेंट भी है, राइट। इन द सेम वे इफ वी आर टेकिंग जॉइंट हिंदू फैमिली, राइट, जिसमें हमने क्या देखा था कि एक फैमिली का कर्ता होता है जो बिजनेस के डिसीजंस लेता है, राइट। अगर उसके डिसीजंस कभी-कभी गलत भी हो सकते हैं या तो फिर उसका जो मैनेजमेंट होता है वो कम नजर आता है, सबकी राय ना लेके अपने आप बिजनेस करता है, तो बाकी के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, राइट, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो आगे कंटिन्यू ना भी करे या सेपरेट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो फाइनेंस मैनेजमेंट ये सारी कमी को दूर करने के लिए कॉर्पोरेट स्टेटस एग्जिस्टेंस में आया, राइट, कंपनी एग्जिस्टेंस में आई और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एग्जिस्टेंस में आई, राइट। सो वी हैड अंडरस्टूड बोथ ऑफ द थिंग्स इन अंडर द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। Okay students, one main point left in cooperative society, the main example of cooperative society is Amul, right? Yes, Amul is under the Gujarat Cooperative Society, Gujarat Milk Marketing Federation Cooperative Society के अंडर में आता है, right? तो अमूल जो है सबसे पहले जो त्रिभुवन दास पटेल जो फाउंडर मेंबर है अमूल के, राइट, उसके बाद आए डॉक्टर वर्गीस कुरियन एज चेयरमैन, राइट, जिन्होंने अमूल का एक कह सकते हैं कि दिशा, एक मिल्क रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन लाने में सबसे बड़ा हाथ था, राइट। तो अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, राइट, तो ये चीज उसमें एग्जांपल के तौर पे आपके पेपर्स में आनी ही चाहिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, वी हैड सीन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, अंडर दैट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वी हैड सीन corporate status and non corporate status. In non corporate status we had seen sole proprietorship, partnership and joint Hindu family. In corporate status we had seen joint stock company and cooperative society, right? So ये पूरा था प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ओके।